अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गेट फार्मा के प्लेटफॉर्म से कोविड 19 लर्निंग सेल से मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी। ही इज़ एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेस्ट मेडिसिन जेपीएमसी कराची एंड कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट साउथ सिटी एंड मेडिकेयर जनरल हॉस्पिटल। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे डॉक्टर साहब हमें बेसिक इनपुट्स देंगे और हमें बताएंगे कि कोविड 19 जैसा कि आप सबको पता है उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स से रिगार्डिंग क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड डॉक्टर साहब इन चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, फॉर्मली वेलकम यू एंड Well, फ्रॉम नाउ सर इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सर। thank you very much. Thank you, Danish. Thank you everyone who has joined this webinar. Today we are going to discuss about this hot topic, which is COVID-19. Before, talking about how to do the prevention or how to take the preventive measures, what I will do is that I will take you through a little bit about this disease, and then we can talk about the preventive measures, and then we will be open to take your questions, and I will try to respond to them as much as I can. So, with that introduction, as we all know, this epidemic started, or now it is a pandemic, started from this Wuhan city of China. It was in early December. Some of the physician, and particularly this Dr. Lai, who was a ophthalmologist, he was one of those people who noticed that a lot of people are dying. They are developing upper respiratory tract infection, which is very rapidly progressing to lower respiratory tract infection, and then suddenly they are dying of short of breath. So he started sending messages on their local WhatsApp group, which started raising alarm. And as you know, China is a very closed society, so he was caught in sending these apprehensive WhatsApp messages, and he was strictly forbidden not to issue these warnings. But he was the first person who raised this alarm that people are developing upper respiratory tract infections, later on pneumonia, and then they're suddenly dying of it. It was late in December that they came to know that this is a virus which is from the corona family, which has got a crown on the surface, corona family, and it was very closely related to a previous epidemic of SARS virus. So it was called as SARS virus 2 initially. And then later on, it was named as novel coronavirus or new coronavirus. And now it has been COVID-19. This is the one which has been there. Although WHO started alarming people for way back in January that an epidemic has started in China, but as usual, we do not take anything seriously worldwide. So it was in March when this infection spread to almost over 150 countries that WHO declared this as a pandemic. So that there has to be a global strategy, global response, limitation of the low people movement so that we can stop the spread of this infection. Statistics about death mortality has been changing every day. This is the latest one, which is in March, but now it has almost reached 50,000 worldwide deaths. And this number figure is increasing day by day. Again, this is the statistics on March 29th. And today, if we see that almost it is reporting 13 deaths, but now it is almost reaching 30 deaths in Pakistan, and the confirmed cases is over 2,000. So, these figures are changing every day. But the problem is that we don't learn from history. यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम कुछ नहीं सीखते अपने पुराने वक्तों से. I just want to take you, and why we are making a lot of hue and cry about this new virus is because we know that almost a century back in 1980, when the flu virus came for the first time, it has caused a similar havoc like now we are seeing the coronavirus. At that time, social media was not there,
So probably people didn't know that, but the state of affair was exactly 100 years back was the same like we have today. आई मीन अगर आप देखें कि न्यूयॉर्क में भी इसी तरह के अब ओपन एयर में जो उनके जो बड़े बड़े गार्डन्स हैं उनमें इस तरह के टेम्पररी हॉस्पिटल्स डाल दिए गए हैं, बना दिए गए हैं। तो ये तो 1918 का है जब पहली दफ़ा स्पेनिश फ्लू जिसको कहा गया वो आया था। और यही चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं कि ऑल थिएटर्स क्लोज अनटिल फर्दर नोटिस, दिस इज बीन आई मीन जो चीज़ें आज हो रही हैं वो हम एक सदी पहले भी देख चुके हैं। The same thing, everybody was wearing a mask, nobody was allowed to go onto a tram or subway without wearing a mask. So it's the same thing has happened, but we haven't never taken any lessons from this. These are what the glimpse of this pandemic, flu pandemic, जो देख रहे हैं कि लोगों को एक साथ बेशुमार अमवात हो रही हैं और लोगों को एक साथ बरी किया जा रहा है। कहते ये हैं कि इस पेंडेमिक में देयर वाज अबाउट 500 मिलियन पीपल हु गॉट इन्फेक्टेड विद दैट। आई थिंक उस ज़माने में आबादी भी है 100 मिलियन ही होगी, तो यानी आधी आबादी जो थी तकरीबन इन्फेक्ट हो चुकी थी इस वायरस से। और देयर वर 50 मिलियन डेथ, 5 करोड़ अमवात हुई। अभी तो हम सिर्फ 30,000 या 50,000 डेथ्स की बात कर रहे हैं, जब ये डेथ करोड़ों में पहुंचेगी तो क्या होगा। तो इसी वजह से ये सारा ह्यू एंड क्राई मचाया जा रहा है कि वी शुड स्टार्ट टेकिंग दिस वेरी सीरियसली, दिस इज गोइंग टू बी अनदर फ्लू वायरस। So this is what the state of affair was. You can see that people were dying and there were hardly people to help them out. So what is this coronavirus? As we know that it is a single stranded RNA virus. It is not a living substance. It is just a sort of a single strand of RNA which is covered by a lipid membrane, and over that there are spikes, protein spikes, जिसको हम रिसेप्टर भी कह सकते हैं। वायरस का ये है कि वायरस खुद तो लिविंग चीज़ नहीं होती। जो हमारे बॉडी में सबसे छोटी लिविंग चीज़ है वो सेल है। अच्छा, सेल से कम जो चीज़ होगी वो लिविंग नहीं होती, तो वायरस भी उनमें से एक है। मतलब वायरस इज नॉट अ लिविंग सब्सटेंस, but when the virus enters into the body and meets the cell, it penetrates into the cell, and once it is inside the cell, it destroyed the working capability of the cell. The cells rupture, and these viruses rapidly multiply in millions and billions, and then they infect all other cells around them. So this is how the viruses work. I mean, we have seen a lot of viruses. There are respiratory viruses causing common cold. There are also, I mean, viruses causing gastroenteritis. बट हमारे ज़माने में जो पहली एपिडेमिक आई थी वो 2003 में आई थी, जिसे हम सार्स वायरस कहते हैं। SARS virus was very lethal virus. It was also from the same family, but somehow the other, the infectivity of that virus was not so strong. So not many people got infected, and it was curtailed very easily. Similarly, this Middle Eastern respiratory virus came in Saudi Arabia in 2012. Again, the same thing. It was also very lethal, but the spread was curtailed very easily because it was not very infective. Now we have got another pandemic, which is of the COVID-19. अच्छा, all these viruses जो ये कोरोना फैमिली के, ये आते किसी न किसी जानवर से ही है। अब जो कोविड-19 के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये बैट से आया है। मर्स जो था मिडिल ईस्ट ईस्टर्न रेस्पिरेटरी वायरस, ये भी कहते हैं कि ऊँटों से आया था। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन ये कहा यह जाता है कि एनिमल टू एनिमल ट्रांसफ़र हो रहा था। जब people who are being involved in handling these animals, they can get infected with them, and once a human being get infected, and then the transmission start, यानी human to human transmission जो है वो फिर start होने लगता है। When anybody, we still, there are some doubts about the way the transmission of this disease occurs, but initially if you see that it occurs from the animals to the human beings, and once it is reached to the human, I mean, it usually infects the lungs. It usually infects the lung, and जब lungs में जाता है तो फिर ये सबसे पहले जो चीज़ करता है वो यही है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जब आदमी खांसता है, जोर से छींकता है, तो बहुत ज़्यादा लुआब के कतरे निकलते हैं और उसमें ये वायरस मौजूद होता है। जब तक ये उन कतरों में मौजूद रहेगा, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, यानी ये एक्टिव रहता है। अगर ये इंसान के अंदर चला जाए, जैसे मैंने बताया कि सेल के अंदर, और सेल को इन्फेक्ट कर देगा,
तो फिर ये अपनी गड़बड़ शुरू करने लगता है. So basically, it spreads from a close contact with any person who has got an infection, or if you are involved in looking after, like we all healthcare workers or healthcare providers are exposed to this occupational hazards. कहते हैं कि इसका normal incubation period जो है, once the virus enters into the body, then from 2 days to 14 days, this is the incubation period. I mean, in this period, I mean, some patients may recover, some patients develop very serious illnesses, and severe cases you can have respiratory failure, you can have hypertension and multi-organ failure. Now, as I mentioned to you, after this incubation period, usually the activity of the virus or the symptoms on an average comes between fifth and sixth day, but it can be extended up to 14, and somebody are saying now that it can be 21 days. Excuse me. So the commonest symptoms which has been reported is fever, seen in almost 80 to 85% of patients, followed by dry cough, fatigue, malaise, and shortness of breath. Shortness of breath, when comes into these patients, I mean, this is an alarming sign. I mean, you should be alarmed when it comes in. There are a few other signs which has been described now recently, like loss of taste sensation, loss of smell sensation. That could also be alerting, I mean, you. And a lot of GI disturbance has also been reported in these patients. So why we are so worried about it? Because this coronavirus, like previous ones, unlike previous ones, has got a very high infectivity. I mean, it is as high in infectivity as a flu virus, and it has got a very high attack. Lekin the good thing is that in majority of the patients, about 80 to 85% of the patients who get this virus develop very mild cold-like symptoms. It is only those people, I mean, in 80 to 85%, only in 10% of the patients, it will progress to a sort of a moderate disease in which may patients start feeling some shortness of breath, high fever, malaise, a lot of body ache. So these sort of symptoms may start appearing in these patients. But in less than 10% of the patients, the disease progresses to severe disease and even critically ill patients. And these are those patients who are older than 60 years of age, who have got any disease which immune compromise them, or they have already pre-existing lung disease. Now the latest the reports are in Karachi से जितने भी patients जिनकी death हुई है, इनमें majority of those patients were having COPD or asthma. So estimated mortality of this disease is 1 to 6%. Again, I mean, this figure may be appearing very high. The reason is that we are not doing a lot of testing. वर्ल्ड वाइड टेस्टिंग जो है बहुत कम लोगों की हो रही है, तो इसलिए जो डिनोमिनेटर है वो सही नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली मोर्टेलिटी कितनी है. लेकिन जो भी ऊपर का रेंज है 6%, ये यूजुअली उन लोगों में देखा जा रहा है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या ओल्ड एज ग्रुप पेशेंट्स हैं जो कि नर्सिंग होम में रह रहे हैं बाहर में, वहाँ पर जो है वो मैक्सिमम मोर्टेलिटी है. लेकिन the important thing to remember is that nobody is immune to this disease or this infection. So this is what it is. Now coming to this, I mean, some definitions which as a treating physician we should know. Okay, what is a suspect case? Because this is the people who we have to be very careful at handling these patients. So a patient who has got acute respiratory symptoms, and we all know what are those. I mean, cough, shortness of breath, fever. So अगर ये चीज़ें हैं और उसके साथ कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या वो इस इलाके में रहता है जहाँ पर ऑलरेडी लोकल ट्रांसमिशन जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका है, तो this patient is called to be a suspect when he was in contact with this people in the last 14 days. Or a patient with an acute respiratory illness having a contact with a confirmed or probable COVID-19 case in the last 14 days before the onset of symptoms. A patient with severe respiratory illness and in the absence of any alternative diagnosis where you cannot explain why he has got this sudden onset of acute respiratory symptoms. So that also should be a suspect for COVID infection. Probable case, a suspect case from whom testing for COVID is inconclusive, or you are still awaiting the result, or for any reason, because of the limited kits availability, the test has not been done. They are the probable cases when they have symptoms and the contact history or living in an area where there is a human-to-human transmission has already been recorded.
Confirmed case when one of the tests, one of the tests, which is basically a nasal swab, it comes out to be positive, irrespective whether the person has developed common sign and symptoms or not. Like we have got one of the politicians who has been claiming that he has a no sign and symptom, yet his test was positive. So yes, he is a confirmed case, and people have to avoid meeting him. So what is a contact? अब contact की history भी जो contact है ये बड़ा important है. One should be remember, this should be taken into proper context. A contact is a person who experienced any one of the symptoms following exposure during the last 14 days after the onset of a probable or a confirmed case. यानी जिसका वास्ता पड़ा है किसी ऐसे patient से या probable case भी था in the last 14 days and now he has developed the symptoms. तो वो कौन से कॉन्टैक्ट क्या होंगे? फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद अ प्रोबेबल और अ कंफर्म केस विद इन 1 मीटर, यानी कम 3 फीट से कम के डिस्टेंस में उसने मिला है और वो 15 मिनट की मुलाकात है, बिल्कुल एक से गुजरते हुए सामने से. इसको हम नहीं कहेंगे कि ये कॉन्टैक्ट है. इवन आप अगर मरीज के सामने से गुजर गए तो इसको हम कॉन्टैक्ट नहीं लेंगे. तो 15 मिनट की जब तक आपकी मुलाकात ना हो और वो भी अनप्रोटेक्टेड हो, यानी आपने कोई अपना प्रोटेक्टिव गेयर नहीं पहना हुआ है और आप हो, तो फिर है डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विद द प्रोबेबल और कंफर्म केस, डायरेक्ट केयर ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे साथ है सबसे ज़्यादा, विदाउट हैविंग एनी प्रोटेक्टिव केयर. तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ कांटेक्ट. और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक केस के साथ हैं जिसको कोई तकलीफ नहीं है, तो आपका कांटेक्ट जो है वो 2 दिन पहले से भी काउंट होगा. यानी अगर 2 दिन पहले उसके डायग्नोसिस से पहले अगर आप उससे मिले हैं तो वो भी आपको कांटेक्ट बना देता है, और 14 दिन बाद का भी मुलाकात जो है वो आपको कांटेक्ट बना देता है. Now disease, as I already mentioned, has been in the different categories of severity. Majority of the patient, 80% of the people will develop mild disease. एंड उसमें जैसा कि नॉर्मल आपको फ्लू में होता है कि नज़ला ज़ुकाम हुआ, खांसी हुआ, कुछ डिग्री ऑफ मलेज हुआ, rhinorrhea हुआ, and this is usually seen in younger adults who are non-immunocompromised people. So ये mild disease है. Moderate में some degree of shortness of breath होगी, fever high होगा, people may have hemoptysis यानी खून आना, कुछ लोगों को डायरिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, बट confusion, your loss of consciousness, that should alert to you that this patient is going into a serious stage. Chest X-ray, although chest X-ray is not so reliable, CT scan might show you early patches of consolidations. So that should alert you that this patient is now developing, this is now becoming a risky patient to be managed at home. Severe disease, definitely this patient has to come to the hospital when the respiratory rate is greater than 30 per minute. और सोफा स्कोर, सोफा बेसिकली स्कोर क्या है कि इस मल्टीपल ऑर्गन फेलियर को दिया जाता है, इसमें रेस्पिरेटरी रेट को देखा जाता है, ब्लड प्रेशर को देखा जाता है और कन्फ्यूजन को देखा जाता है. इनमें से कोई 2 चीज़ें भी मौजूद हों, यानी रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 30 हो जाए, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 100 से कम हो जाए या मेंटल कन्फ्यूजन हो जाए, कोई 2 चीज़ें भी मौजूद हों, तो इसको हम कहते हैं सोफा स्कोर ग्रेटर देन 2, and this is a severe disease. Similarly, if the saturation is less than 93% or less than 92%, if the patient is receiving oxygen and the ratio of inspired oxygen to partial pressure of oxygen is less than 300, this should alert you to the possibility. हम commonly use करते हैं ICUs में, confusion हो, agitation हो, restless हो, या chest x-ray पे आपको bilateral infiltrate नजर आने लगे जो कि new है, तो then it is a severe disease, or critically when there is a overt respiratory failure, ARDS, septic shock या multi organ failure है. तो ये इसकी स्टेजेस ऑफ द डिजीजेज हैं. आई मीन कुछ लोग तो हैं ग्रेजुअली इनिशियल स्टेज से ही मेजॉरिटी ऑफ देम रिकवर कर जाते हैं. वेरी फ्यू पीपल प्रोग्रेस टू दिस स्टेज. नाउ दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन व्हेन ट्रीटिंग फिजिशियन हमारे लिए और खसूसन चेस्ट फिजिशियन के लिए कि किसको फ्लू है, किसको कोरोना वायरस है. टू टेल यू द ट्रुथ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन द सिम्टम्स आर ऑफ रीसेंट ऑनसेट. लेकिन अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर है, बहुत ज़्यादा बॉडी एक है, ठीक है, और अगर कोई डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है जो कि पहले नहीं कभी उसको एक्सपीरियंस हुआ है, तो आई थिंक दैट शुड अलर्ट यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेस्टिंग डन इन दीज पेशेंट्स. I mean, it is sad that such patients have also been refused because of the limited availability of the kits, but definitely they should be seen so that if the test is positive, maybe आपको कुछ ना किया जाए, आपको हॉस्पिटल में भी दाखिल ना किया जाए,
लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दीज पेशेंट्स हैव टू बी आइसोलेटेड। तो अगर आपका टेस्ट किसी वजह से नहीं भी हो रहा और आप समझते हैं कि मुझे फ्लू है, तब भी कायदे की बात यह है कि अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। So as I told you, the diagnosis is basically on nasal sampling, and that sample is being tested through the PCR, nucleic acid amplification test, जिसका रिजल्ट जो है 12 से 24 घंटे में आपके पास आ जाता है ताकि आपको पता चल जाए। अब मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि IgM और IgE ब्लड टेस्ट जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, इसका फायदा ये होगा, दीज एंटीबॉडीज, वैसे तो IgM और IgG हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, तो इनको चेक करने से हमें नहीं पता चलेगा कि किसी को कोरोना वायरस है, कोई भी वायरस होगा ये बढ़ जाएंगे। तो आई नो देर आर सम हॉस्पिटल्स विच आर डूइंग दिस टेस्टिंग विच इज नॉट राइट, और उसकी वजह से मुझे 2-3 फोन आए कि जी हमारा ये टेस्ट में गड़बड़ थी, ये अभी तक अमेरिका में नहीं आया है। तो आई थिंक अभी हमें एंटीबॉडी टेस्टिंग इज नॉट अवेलेबल, सो डोंट गो ऑन टू दिस टेस्ट। सो एनी टेस्ट अदर देन द नेजल स्वैब इज नॉट करेक्ट एट दिस स्टेज एट दिस टाइम ऑन टाइम। ठीक है जी, तो इसके लिए आप ज़रा ख्याल कीजिएगा कि इस पे कन्फ्यूजन में मत जाइएगा। हाँ, एंटीबॉडी टेस्ट अगर एक दफ़ा आ गए तो हमारे बड़े बड़े यूज़फुल होंगे। उसकी वजह ये होगी कि ये हमें बता देंगे अगर हमारे अंदर एंटीबॉडी है कि एक तो हमें इन्फेक्शन हुआ है, दूसरी चीज़ ये होगी कि हमें ये पता चल जाएगा कि मोस्ट लाइकली वी हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट, एंड सच पीपल मे बी अलाउड टू वर्क एंड लुक आफ्टर द कोरोना वायरस पेशेंट्स। तो ये हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी कि अगर हमारे यहाँ हमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं, तो अब हम जाके हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं विद ऑल ड्यू प्रिकॉशंस स्टिल, क्योंकि यू नेवर नो कि दिस वायरस कैन म्यूटेट एनी टाइम्स। Up till now, till to date, we don't have any definite therapy available. I mean, people can ask me questions. There are multiple agents. अगर आप अपना सोशल मीडिया को देखेंगे तो हर किस्म की थेरेपी जो है वो अवेलेबल है इसमें लेकिन अभी तक इनका कोई डेफिनेट नहीं आया है। इसी तरह से पैसिव इम्यूनाइजेशन का कराची में बहुत शोर गुल्ला है, लेकिन अभी तक इसको किसी ने डेफिनेटली प्रूवन नहीं किया कि इट विल रियली मेक अ डिफरेंस और नॉट। तो दिस इज व्हाट इट इज टिल वी डेवलप अ वैक्सीन विच विल बी अ गेम चेंजर। आई थिंक अगर हमें कोई वैक्सीन, लेकिन लग ये रहा है कि अगले 1 साल तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं होगी। वैक्सीन डेवलप करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू टेक इट्स ड्यू टाइम। उस वक्त तक हमें वो प्रिकॉशन ज़रूर लेने चाहिए जो कि हमें इस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, एंड दैट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग। 6 फीट से करीब किसी के ना जाइए, मिनिमम 3 फीट, लेकिन 6 फीट से दूर अगर रहें तो बहुत अच्छी बात है। I mean, limited traveling, very necessary traveling outside your house, and no gathering whatsoever. So this is should be in quarantine. Keep yourself into quarantine as far as possible. Don't go to any restaurant. Don't go to any games and all these activities. मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे आज बाहर खेल रहे होते हैं क्योंकि घर में जगह नहीं होती. That could also be a dangerous. Now coming to the point कि जी डॉक्टर्स के लिए भी ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है क्योंकि हमारे पास इसकी कोई इम्यूनिटी नहीं है। तो अगर देखें तो चाइना में भी बहुत सारी अमवात हुई हैं डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की। सबसे अलार्मिंग जो है वो इटली में हुई है। ओवर 60 डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ हैज डाइड। अ लॉट ऑफ देम हैव गॉन ऑफ sick because they have already contacted coronavirus. So we have to take an additional precautions as far as we are concerned, because a lot of these patients may be totally asymptomatic. उनको कोई symptoms भी ना हो, yet they have got virus and they can communicate. इसी वजह से बहुत पहले ही WHO ने ये अनाउंस कर दिया था in January, end of the January 2020, that this epidemic is going to come and the health workers will be the backbone of fighting this epidemic. So they should be well protected. They should be provided all sorts of protective gear. But it is very unfortunate. Pakistan, all over the world, nobody has taken this advice seriously and has exposed the healthcare workers to serious hazards. Now, once we know that, there should be some strategy which should be adopted, even if you are doing your private clinic or if you are doing a hospital work, there has to be a triage system in this case. आप ई क्लिनिक में भी होना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि फ़ोन से अपॉइंटमेंट कीजिए। अब मुझे पता है कि यूएसए में जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो फ़ोन पे, अगर आप वो आपसे पूरी हिस्ट्री फ़ोन पे ही लेते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी या बुखार है ऑफ रीसेंट ओरिजिन, दे विल नॉट अलाउ यू टू कम इनटू द प्रैक्टिस। वो आपसे कहेंगे वेटिंग एरिया पे वेट कीजिए, वहीं जाके आपकी हिस्ट्री ली जाएगी और वहीं आपसे आपको कुछ एडवाइस की जाएगी।
तो इन लोगों को एक ट्रायज सिस्टम हमारे पास होना चाहिए जहाँ पर हर किस्म की प्रोटेक्शन जो जा रहा है इस ट्रायज में, उसके पास ये प्रोटेक्शन होना चाहिए कि जी उसको क्या करना है. So I will go through this now rapidly. And similarly, patients should be kept at a distance from each other, even in your clinics, in your hospitals. They should not be closely sitting together, crammed in the places. अगर आपके पास जगह कम है तो खुदारा बारी बारी लोगों को बुलाइए अंदर, ऐसा ना हो कि बहुत सारे हो जाएं. और अगर जिसमें सस्पेक्ट है, अगर आपने उनको बाहर नहीं देख सकते तो खुदा के लिए उनको अलग बिठाइए, उनको हर जगह पे ना बिठाइए. ये वो प्रोटेक्टिव गेयर्स हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे हमें यूज़ करने चाहिए. फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू आर सिटिंग इन एन ओपन प्लेस, इन ट्राइज प्लेस वेयर यू आर नॉट एट अ रिस्क, तो जस्ट सिंपली वेयरिंग अ मास्क इज इनफ. But if you are involved in doing the testing, right, then you should be having gloves, gown, glasses जो कवर आपकी आई हो, क्योंकि जब आदमी का आप टेस्ट करते हैं तो वो खांस भी सकता है. तो ये आपको फुल प्रोटेक्शन पे जाना है, इसीलिए गॉगल्स भी आपके पास होने चाहिए. इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन टेकिंग केयर ऑफ दैट, देन यू शुड बी कम्प्लीटली कवर्ड विद अ शील्ड, विद अ कैप, विद अ गाउन, विद अ ग्लव्स, एंड इवन जैसे इसमें नहीं दिखाया गया, शू कवर भी होने चाहिए जो कि आपके नी तक होने चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ ड्रॉपलेट्स सेटल डाउन ऑन योर शूज. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोटेक्शन करना है. सो psychological, we all know that we are all going through this stress, that every day people are being calling us. So this should be also addressed, particularly in the workers who are working with you. They can have a lot of issues. Try to tell them not to smoke and during this period, particularly because that can expose you to further hazards. Similarly, I mean, if needed, you should talk to the seniors. If needed, you have to talk to a psychologist to help you out with this. Hand washing or hand hygiene is very important before even touching a patient. While you are before after you have to take full precautions. After you have touched the patient, if you are going to a second patient, you have to completely wash your hands. If you are being exposed to any body fluid, then you have to wash your hands. After patient, even surrounding, अगर आपने बेड को भी टच किया है तो you have to wash your hands. So hand washing is very important. Some protocols होम एंटरिंग के लिए ज़रूरी हैं. व्हेन यू आर रिटर्निंग टू होम, not try not to touch anything. Take off your shoes outside if possible, because shoes is another क्योंकि जब आप खांसते हैं या छींकते हैं या किसी पेशेंट ने भी या किसी ने भी छींका है तो वो सारे जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो आपके शूज़ पे सेटल होंगे. अगर आप कुत्ते को बाहर ले जाना चाह रहे हैं तो उसको भी पहले से उसके पैर जो है उसको साफ करके अंदर लाएं. इसी तरह से अगर आपने कोई एप्रन पहना हुआ है तो उसको घर में लाने से पहले ही बाहर निकाल दें, या कोई कमरा होना चाहिए कि अंदर ना लाया जाए. आप अपनी कार की कीज जो है उसको भी अलग सेपरेट रखेंगे, उसको भी घर के अंदर नहीं ले जाने जाएंगे. यू गो स्ट्रेट, टेक अ शावर, वॉश योर हैंड्स कम्प्लीटली. अगर आपके पास कोई चीज़ है जैसे फ़ोन वगैरह है तो इसको, या चश्मा है तो सैनिटाइज़र से इसको स्टरलाइज कीजिए, rather than कोई लिक्विड वाटर लिक्विड हो, क्योंकि वो अंदर चला जाएगा तो दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम. And similarly, if you have brought any grocery bags, if you have got some disinfectant, it's better to do that. If you are wearing a gloves, you should take it off outside your house or before you enter into the house. Um, बाज़ औक़ात सारे इन्फेक्शंस को डिसइंफेक्ट चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल होता है. घर को भी आप दिन में 1 या 2 दफ़ा ब्लीच से डिसइंफेक्ट कीजिए ज़रूर. अगर आप पेशेंट के साथ रह रहे हैं जिसको आपने क्वारंटाइन किया हुआ है तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट ही शुड बी इन अ सेपरेट रूम. And if you have got enough space, the best thing is that if he has got a separate toilet and a separate room, he should be there. He should be communicating for all, his needs through a telephone or an intercom if it is possible, या मोबाइल फ़ोन से. तो वो अपने कमरे में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा. उसको खाना पानी जो कुछ भी चाहिए वो कमरे से बाहर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. He will take it inside, eat there, wash his utensils, and then he can bring them out. Similarly, clothing has to be washed separately. अगर आप उसको हैंडल कर रहे हैं तो you should be wearing the gloves. So this should be important. So any suspect जो मैंने बताया है, or who goes into quarantine, or any confirmed case, the mild case who has to stay in the house, should be quarantined for at least 2 weeks. अगर वो definite case है तो till his virus is finished from his body, taken away from his body, till उसको क्वारंटाइन ही में रहना पड़ेगा. जब बाहर जा रहे हैं ये कोशिश कीजिए कि पूरी आस्तीन की कमीज पहनिए, क्योंकि आप आके कमरे को चेंज कर सकते हैं. हाँ, बाल अपने पूरी तरह से बांध के जाइए, खुले हुए नहीं होने चाहिए हैं.
दूसरी बात जो एक चीज़ हम लोग बहुत कॉमनली नोट करते हैं, इंग्लैंड में तो ये पहले ही से चीज़ थी कि बेयर बिलो द एल्बो, यानी कि एल्बो से नीचे आप कोई चीज़ नहीं पहनेंगे, घड़ी नहीं पहनेंगे, अंगूठी नहीं पहनेंगे, या तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें भी इन्फेक्शन बहुत आ जाता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे घर से जाने से पहले भी। अगर किसी डोर को, किसी नॉब को आप टच कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने हाथ से ना कीजिए। अगर हाथ से कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को मेक श्योर दैट यू विल नॉट टच योर फेस and you will wash your hand before any such thing like touching your face or anything like that. तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब ग्लव्स का है, ग्लव्स नॉर्मली इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी पर्सन हु इज गोइंग आउट ऑफ हिज हाउस, लेकिन मैंने अपना देखा है कि अगर ग्लव्स पहने होंगे तो यू विल सम हाउ दी अदर, आप एक कॉन्शियस रहते हैं कि आपने कुछ पहना हुआ है, और यू विल ट्राई नॉट टू टच योर फेस। तो आपको हर वक्त एक अवेयरनेस रहती है, मुझे ग्लव्स पहनने का फ़ायदा ये नज़र आता है। जी, सॉरी। अच्छा, मैं कुछ एक दो जल्दी से कॉमन मिथ्स को एड्रेस कर लेता हूँ, फिर आई थिंक वी शुड स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस। काफ़ी टाइम हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को खाने से आपको कुछ इम्यूनिटी आ जाती है। इसका कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है। नॉर्मल डाइट लीजिए, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट एनीथिंग। कुछ कहते हैं प्याज खाने से हो जाता है, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ कहते हैं कि जी ये मस्कुटो से तो नहीं होगा, नहीं, देयर इज़ नो एविडेंस, इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ये भी कहते हैं कि एरोसोल्स, सो वो चीज़ें आप इस्तेमाल ना कीजिए जो एरोसोल जनरेट करते हैं। मसलन नेबुलाइजर शुड नॉट बी यूज्ड इन कंफर्म केस ऑफ कोविड 19 पेशेंट्स। मैंने देखा है कुछ लोगों ने शावर बना रखे हैं, टनल्स बना रखे हैं शावर की। पाकिस्तान में लोगों को पैसा कमाने के बड़े बड़े गुर आते हैं क्या इसके अंदर से गुजर जाइए, कोरोना मर जाएगा। भाई कोरोना आपके जिस्म के अंदर है। आपके कपड़ों की सफाई तो आप वॉशिंग मशीन में भी डाल के धो सकते हैं उनको, तो ऊपर से शावर लेने की जरूरत नहीं है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्री, अगर उसमें कोई पेशेंट गया है, अगर उसमें कोई पेशेंट गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे अभी हम सवाल करें 2 मिनट में सारे अच्छा, आप लोग अगर मुझसे कनेक्टेड हैं तो मैं दो चार चीज़ें इतनी देर में अपनी तरफ से सवाल जवाब दे दूं जब तक आप सवाल पूछे कि कुछ लोग कहते हैं गर्म वेदर हो जाएगा, गर्म वेदर हो जाएगा तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ज्वाइनिंग एंड एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट देम बिकॉज दे आर नॉट बैक्टीरिया, दे आर वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू द गुड्स मैन्युफैक्चर इन चाइना, इंग्लैंड, कहीं से भी आ रहा हो गुड्स, इससे ट्रांसफ़र होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। इसी तरह से it's not an airborne infection, so you should not be scared while you are sitting at home. You will not catch this infection. um, Vaccine against pneumonia or flu vaccine, do they protect against this virus? No, it's a new virus, so we don't know, but definitely you should be vaccinating yourself with this. Regular washing is, I think, of your hand is the most important hygienic maneuver which you can take. And remember that if you have cough, or if don't cough on the hands. अच्छा, तो हमने कुछ मिथ्स की बात कर रहे थे कि देखें, हैंड वॉशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइजीनिक स्टेप विच यू कैन टेक, बिकॉज यू नेवर नो कि यू कैन, देखें, पहला तो ये है कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या एरोसोल से, ये आप तक मुंतकिल होगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हैंड से होगा। जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को, खसूसन कोई मेटलिक चीज़ को, जैसे कि डोर नॉब्स हैं, कोई ओपनिंग डोर्स हैं, इन चीज़ों से जब आप किसी भी फॉर्माइट को टच करेंगे, इसमें ये कई दिन तक जिंदा रह, मतलब जिंदा का मतलब ये है कि मौजूद रह सकता है और एक्टिव रह सकता है। तो इसलिए आपको हाथों को बार बार धोना पड़ेगा। आई थिंक वैक्सीनेशन के बारे में मैंने आपसे जिक्र कर दिया है। रेगुलर वॉशिंग ऑफ द हैंड, ग्लव्स पहनने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप, मैंने जैसे बताया आपको पहले कि ग्लव पहनने से ये महसूस होता है कि आपने कोई चीज़ पहनी हुई है और डेलिबरेटली यू डोंट टच योर फेस, सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली एडवांटेज बाय वेयरिंग ग्लव्स। ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि पीपल ऑफ एनी एज ग्रुप कैन गेट इन्फेक्टेड। वैसे कहा कि जो ओल्डर पीपल हैं उनमें ये डिजीज़ ज़्यादा सीवियर होगी, यंगर में लेस लाइकली होगी। विटामिन सी का लोग कहते हैं, विटामिन सी जनरली आपको नज़ला ज़ुकाम से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, बट क्या इसका डेफिनेट कोई रोल है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ और प्रिवेंशन? दिस इज़ नॉट बीन यूज्ड, this has not been known to us, but I know that in New York they are trying very heavy doses of vitamin C to treat these patients. So till we have got something definite, I think social distancing, taking good respiratory hygiene, not to be coughing on the hands, not to be touching your face. कहते ये हैं कि एक आदमी एक घंटे में अपने फेस को 20 से 25 दफ़ा टच करता है, तो that has to be deliberately avoided. Make sure that you clean, wash your hands for 20 seconds. 20 seconds का मतलब ये होता है कि जब आप
अच्छी तरीके से अपने हाथ धो लेते हैं तो वो साबुन जो है, वो जो लिपिड लेयर होती है जो उसके ऊपर कवरिंग होती है कोरोना वायरस पे, उसको डिसॉल्व कर देता है। तो ये कोरोना वायरस जो है फिर ख़त्म हो जाता है, फिर ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर होके कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा। तो इसलिए वॉशिंग विद सोप प्रॉपरली, कोई ज़रूरत नहीं है सैनिटाइज़र की, लेकिन 10-20 सेकंड तक आपको अपने हाथ को साबुन से मलना है ताकि उसमें एक अच्छा झाग लादर बन जाए। तो ये फिर आपको उसकी जो कवरिंग है उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है और जो वायरस है वो ख़त्म हो जाता है। तो हैंड वॉशिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब एक और सवाल भी पूछा जा रहा है, इस पे भी काफ़ी हो रहा है कि वायरल लोड, क्या एक या दो वायरस आपकी बॉडी में अगर एंटर हो जाएं तो क्या वो कोई डिजीज़ करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, हर जो हम इन्फेक्शन को देखते हैं उसमें बैक्टीरियल और वायरल लोड इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ टोटली न्यू, जिसके अंदर जो प्रीवियस और इन्फेक्शंस होते हैं उनमें कुछ ना कुछ आपके अंदर बॉडी रेजिस्टेंस होता है। लेकिन फ्लू की बात कर लें, अगर फ्लू में आपके ज़्यादा वायरसेस अंदर आएंगे तो आपको ज़्यादा सीवियर फ्लू होगा, अगर कम होंगे तो कम आपको होगा, क्योंकि आपके अंदर एक ऑलरेडी इनबिल्ट इम्यूनिटी मौजूद है, वो फॉरन एक्शन में आना शुरू कर देती है। लेकिन इस वायरस के खिलाफ हमारे पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। तो हतमी तौर पे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी अगर 2-4 वायरस भी आपके अंदर चले गए तो क्या होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिनमें कम जाएंगे उनको माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज होगी, पर्टिकुलरली अगर उनको कोई और डिजीज ऑलरेडी मौजूद नहीं है, उनके अंदर रैपिडली अपनी इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी और इस वायरस के खिलाफ वो काम करना शुरू कर देंगे, तो माइल्डर डिजीज होगी। उसका एक एडवांटेज भी है कि माइल्डर डिजीज अगर आपको कभी हो भी गई है तो फॉर फ्यूचर इन्फेक्शन से मोस्ट प्रॉबेबली यू विल बी सेफ, बिकॉज जितने भी हम वायरल इन्फेक्शन देख रहे हैं, मीजल्स हो, मम्स हो, चिकन पॉक्स हो, अगर आपको एक दफ़ा हो जाता है तो फिर दोबारा उनके होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन ये वायरस जो कमबख्त है, ये फ्लू वायरस है जो कि हर वक्त अपनी हेयत को चेंज कर सकता है, अपनी लुक को चेंज कर सकता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकता है। इसलिए ये बात यकीनी तौर पे नहीं कही जा सकती है कि दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। देयर आर सम केसेस व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड, सो वन हैज़ टू टेक प्रिकॉशंस। और जब वायरल लोड की बात हम करते हैं तो वायरल लोड के बारे में भी अभी हमें हतमी तौर पे नहीं पता है। ये एक अंदाज़ा किया जा रहा है कि अगर आपको कम इन्फेक्शन हो, यानी कम वायरसेस आपके अंदर गए तो कम इन्फेक्शन होगा। तो पहला काम हमें ये करना है कि हमें जो हाईली इन्फेक्शियस लोग हैं उनसे दूर रहना है अपने आप को, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप कहीं बाजार में जाते जाते किसी के सामने से गुजर गए तो ये एक जो आपका वास्ता है वो चंद सेकंड के लिए हुआ है। तो कहते ये है कि यूजुअली आपका जो वास्ता होना चाहिए वो 6 फीट और लेस देन 6 सेकंड होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा का आपका कांटेक्ट किसी आदमी के साथ नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है ये चीज़। बाकी अगर मुझे नहीं लगता कि सवाल और जवाब हो सकेंगे, लेकिन अगर कोई सवाल और जवाब है तो मुझसे फ़ोन पे पूछ लिए जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सवाल और जवाब शुरू हो रहे हैं कुछ? जी सर। बिस्मिल्लाह। सर पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू टेक केयर अ पेशेंट एट होम व्हेन ही और शी इज इन आइसोलेशन, व्हाट अबाउट देयर यूज्ड डिशेस एंड क्लोथ्स। सॉरी, क्या कहा, फिर से रिपीट कीजिएगा जोर से। सर क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मैं समझ टैकल अ गया पूरा पेशेंट, क्वेश्चन, आखिर का लफ्ज क्या था, आखिर की लाइन? व्हाट अबाउट देयर यूज्ड डिशेस, यूटेंसिल्स जी एंड क्लोथ्स। जी जी, देखिए मैंने आपको बताया है कि नॉर्मली अगर एक पेशेंट सस्पेक्ट है या केस है, केस भी माइल्डर फॉर्म ऑफ केस, इट्स बेटर टू टेक देम, कीप देम इन हाउसेस रादर देन बर्डिंग द हॉस्पिटल। हर आदमी ये चाहता है मुझे अस्पताल में चले जाएं, ऐसा नहीं कीजिए। अस्पतालों में जगह नहीं है इतनी मौजूद कि जितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है कि सबको केटर कर सके। जो बेचारे नॉर्मल पेशेंट होंगे उनको भी नहीं देखा जा सकेगा। तो खुदारा ये ना कीजिए। मैंने बताया कि 80 to 85% घर में ही रिकवर कर सकते हैं। अब बेहतर ये है कि जिन लोग जो साहिब हैसियत है, जो अलग कमरे में रह सकते हैं, उनका अलग बाथरूम है, तो वो अपने आप को उसमें बंद कर लें, फैमिली से कम्युनिकेट करें फॉर एटलीस्ट बाय द मोबाइल फ़ोन। अपने खाना कमरे में ही होना है, कोई अंदर नहीं लाएगा, बाहर रख दिया जाएगा, आप उसको अंदर कमरे में लेके जाएंगे, अपनी सारी चीज़ें वहीं पर रहेंगी। कोशिश ये कीजिए कि आप ग्लव्स पहन के अपने प्लेट चमचों को धो के वापस रख दीजिए। आपके कपड़े जो हैं, बेडिंग जो है, उसको उतार के एक पॉलीथीन बैग में बंद करके, अगर डबल पॉलीथीन हो बैग तो ज़्यादा बेहतर है, उसको बाहर रख दिया जाए और उसको कोई आदमी ग्लव्स पहन के अलग धोए उनको, ताकि वायरसेस आप पे मुंतकिल ना हो। तो ये प्रिकॉशंस लेनी है आपको व्हेन यू आर सेल्फ क्वारंटाइन। अगर आप सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट का मतलब ये है कि आपको शुबा है कि आपका किसी से वास्ता पड़ा है, तो 14 दिन इंतजार कीजिए।
14 दिन में कोई साइन एंड सिम्टम नहीं हो तो अपना क्वारंटाइन को खत्म कर दीजिए, ठीक है। और कंफर्म केस हैं तो आपको अपना टेस्ट कराना है जब तक वायरस आप में से डिसअपेयर ना हो। राइट सर, थैंक यू सर। सर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं तो सर रियल टाइम में मैं आपसे वो क्वेश्चंस करना चाहूंगा सर। सर डायरिया के जो डायरिया और बॉडी पेन है, तो उसके अलावा भी अगर कोई सिम्टम्स आ रहा है तो पेशेंट्स में, क्योंकि फ्रॉम रीसेंट डेज ये देखा जा रहा है कि जो इनिशियल सिम्टम्स से वो बहुत बाद में जाके सामने आ रहे हैं, जैसे कि फ्लू हो गया और ड्राई कफ हो गई। एज पर सर WHO, डायरिया और बॉडी पेन जो है वो एक सिम्टम है जो कि GI सिम्टम्स में आता है। तो सर ऐसे अगर केस कोई रिपोर्ट हो रहे हैं तो क्या उस पर्टिकुलर पेशेंट को भी आइसोलेशन में चले जाना चाहिए? इट्स बेटर, देखिए जहां पर भी शुबह हो जाए इट्स बेटर टू बी आइसोलेटिंग योरसेल्फ। अगर आप टेस्ट भी नहीं करा सकते हैं तो इट्स बेटर टू आइसोलेट योरसेल्फ। 14 से 15 दिन तक आइसोलेट कीजिए ताकि आपके अंदर अगर कोई अलामत पर्टिकुलरली, देखिए डायरिया से ये लगेगा नहीं इतनी तेजी से जब तक आपको कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ना हो। मेन कॉन्टैक्ट जो है फीको ओरल रूट नहीं है, इसका अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो मेन जो इसका जो है रूट, जिस तरह से कि अगर कोई खांसेगा छींकेगा, अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं आते 14 दिन तक तो आई थिंक यू आर ओके एंड सेफ। लेकिन अगर आपने वायरस को टेस्ट करा ले और वो नेगेटिव है तो देन यू फील सेफ, आई मीन इन मीटिंग पीपल। राइट सर। सर एक और मिथ जो है वो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहा है, इट्स दैट कि इफ अ पेशेंट जिसको हो गया है और कोरोना एंड इफ ही रिकवर्स, तो ये एक मिथ आ रहा है कि ही माइट हैव फाइब्रोसिस और अदर स्ट्रक्चरल डैमेज। सो अगर वो रिकवर हो रहा है तो क्या इफ दैट पेशेंट विल लीड टू एस्थमा और COPD इन फ्यूचर? देखिए अभी ये बताना बड़ा प्रीमेच्योर बात है। हाँ, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है नॉर्मली, जिसको हम ARDS कहते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को फाइब्रोसिस हो जाता है और परमानेंट लंग डैमेज हो जाता है। तो ये स्टेज जो डिजीज़ तो 1 या 2% लोगों में होगी और उनका यकीनन परमानेंट डैमेज होगा। बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जिनको कोरोना हुआ है उनको कोई एक दफ़ा रिकवर कर गए तो फिर उनको कोई इशू चांस का नहीं हो। जैसे फ्लू में होता है, अगर आप फ्लू से रिकवर कर जाएं तो फिर आपको जी। कोई अल्लाह ना करे प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह से लेकिन अगर फ्लू में भी बाज़-औक़ात आप सिंपल इन्फ्लुएंजा में भी आपको वेंटिलेटर पे चला जाना पड़ता है तो फिर वही चीज़ें होंगी। तो हम उन उन उस को देखते हुए ये बता सकते हैं कि अगर आप ARDS डेवलप कर लिया तो इसके चांसेस हैं कि यू मे हैव सम परमानेंट डैमेज टू योर लंग्स। राइट सर। सर डॉक्टर कम्युनिटी से सर एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था सर, इट्स दैट के जो PPE सूट्स डॉक्टर्स इसको वेयर कर रहे हैं तो आर दे रीयूजेबल, एंड इफ यस तो सर इसको डिसइंफेक्ट करने का क्या तरीका है? अदरवाइज अगर कोई प्रॉपर इस पे हमारे पास प्रिकॉशनरी मेजर्स अवेलेबल नहीं है फॉर PPE सूट्स, सो क्या इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए? देखिए यूजुअली अगर हम देखिए प्रोटेक्शन जो है, मेन प्रोटेक्शन जो होता है वो N95 मास्क से होता है। प्रॉब्लम ये मैं मुझे मालूम है कि WHO अब कह रही है कि मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मरीज़ देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको N95 मास्क चाहिए और वो प्रॉपरली फिटेड होना चाहिए है, जो प्रॉपरली सील होना चाहिए, यानी कि साइड से कोई हवा ना जाए। उसका तरीका ये है कि आप एक स्प्रे लेके अपने सामने छिड़क रहे हैं और आपको अगर कोई स्मेल नहीं आती है तो इसका मतलब इट हैज़ गॉट अ प्रॉपर सील, वो आपको प्रोटेक्शन देता है। तो अच्छा, ये 4 से 6 घंटे से ज़्यादा आप पहन ही नहीं सकते, उसके अंदर मॉइस्चर डेवलप हो जाता है और फिर वो आप ही के लिए और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। फिर अक्सर जो हमारे यहाँ N95 मास्क यहाँ कराची में मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं, मावल तो मिल नहीं रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो उसमें एक्सपिरेटरी पोर्ट नहीं लगे हुए हैं। उससे क्या होता है कि सांस जो है पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके सीने में दर्द होना, घुटन महसूस होना, ये सब कुछ हो सकते हैं। तो व्हेन यू आर इन क्लोज कांटेक्ट विद सच पर्सन तो ऑलवेज वेयर N95 मास्क। इसीलिए ट्राइज का सिस्टम मैंने बताया है कि ऐसे पेशेंट को आप दूर देखें और उस वक्त आप ज़रूर मास्क अच्छी तरह से पहन के जाइए, देखिए। लेकिन रीयूजेबल, इसको ये कहना कि जी आज भी पहन लूंगा, कल भी पहन लूंगा, परसों भी, आई थिंक इट्स नॉट राइट। एक ज़रूर चीज़ है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जो होते हैं, कुछ हम अपना इंस्ट्रूमेंट अल्ट्रा वायलेट लाइट से कहते हैं कि वायरस अल्ट्रा वायलेट लाइट से बहुत जल्दी मर जाता है। अगर आप अपना उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में 15-20 मिनट रख सकते हैं तो मे बी यू माइट बी एबल टू रीयूज इट, बट आइडियली नॉट। थैंक यू सर। सर फ्यू मोर क्वेश्चंस। सर व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोक्विन, जो हमारे पास बड़ा देखा जा रहा है सर आजकल, बहुत इसके अगेंस्ट मिथ
बता रहे हैं, तो जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल, अब गाइड मार्केट से कीजिएगा गायब सर। हो गई है, मार्केट से गायब हो गई है। ट्रम्प साहब की मेहरबानी है, उन्होंने इसको फौरन कह दिया कि गेम चेंजर है। अभी तक हमारे पास इसके जी अथेंटिक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं हुए हैं। एक फ्रांस से ट्रायल हुआ था जिसमें 6 आदमियों को दिया गया, 6 आदमी के 6 आदमी रिकवर कर गए। अब वो बाई चांस भी हो सकता है, 80% जैसे मैंने कहा रिकवर कर जाते हैं, तो वो रिकवर कर गए। तो उस पर ये बुनियाद डाल दी गई कि जी क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन वायरस के खिलाफ एक्ट करती है, ये हमें बहुत पहले से पता है क्लोरोक्विन करती है, लेकिन बहुत माइल्ड सॉर्ट ऑफ उसका एक्शन है कि वंस इट वायरस अंदर चला जाए तो वो सेल का पीएच चेंज कर देती है और वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। तो क्लोरोक्विन का रोल अभी तक कोई स्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ ट्रायल्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन चाइना, इन इंडिया, इन यूके, कि क्लोरोक्विन का है। इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज ने या उनकी गाइड को जो है चेस्ट सोसाइटी, उसने तो रिकमेंड भी कर दिया है कि क्लोरोक्विन हर पेशेंट को दी जाए, जिसको शुरू में देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। मैं नहीं समझता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा अभी तक रोल इस्टेब्लिश हुआ है। तो जब तक ना हो, देर आर सम साइड इफेक्ट्स विद क्लोरोक्विन ऑल्सो, particularly if you are combining with azomax, एजोथ्रोसिन, एजिथ्रोमाइसिन, तो फिर आपके लिए ज़्यादा मसला बन जाएगा। राइट सर। सर जनरल पब्लिक के अंदर एक थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड सोशल मीडिया एक बड़ी एक मिथ जो है वो चल रही है आजकल, कि थ्रू टेकिंग स्टीम, तो सर क्या अगर इफ द वायरस इज आपके नेक के अंदर, आपके थ्रोट के अंदर वायरस आ चुका है, तो इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि ड्यू टू स्टीम वी कैन इराडिकेट इट? लेकिन मैंने बताया ना, पाकिस्तानी लोग जो है ना पैसा कमाने का कोई ना कोई धंधा जरूर ढूंढ लेते हैं। एक साहब है, वो कोई स्टीमर ले आए हैं जर्मनी से, और 100,000 रुपए लेके 5 मिनट की स्टीम दे रहे हैं और बता रहे हैं सीधा साइनसेस में जाता है और वायरस को खत्म कर देता है। अल्लाह मियाँ ने नाक को इतना खूबसूरत ऑर्गन बनाया है कि आप गर्म से गर्म इलाके में चले जाएं जी +50 पे, आपके बहुत सारे लोग सिडनी वगैरह में रहते हैं, आप -50 में चले जाएं, लेकिन जब नाक से हवा गुजरती है, जब तक वो अंदर जाती है, उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो ये कह देना कि स्टीम, अच्छा वो बता रहे हैं कि जी क्योंकि स्टीम जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है और उसका टेम्परेचर भी जी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जब तक वो नाक तक पहुंचती है तो आधा तो टेम्परेचर उसका वैसे ही गिर जाता है। अगर 100 आपके फेस पे लगेगा तो फेस ही जल जाएगा आपका। तो भाई खुदा जी का वास्ता यार, को इतनी बेवकूफ़ी की बातें तो ना करो ना। तो खुदा रहा, स्टीम से कुछ नहीं होता। स्टीम से हाँ एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि मॉइस्चर आपकी नाक में जाए तो आपकी नाक खुल जाएगी, रास्ता साफ हो जाएगा, तो बाकी और कोई फायदा नहीं। राइट सर। सर वी आर टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन। सर व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लू वैक्सीन इन कोरोना? डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि फ्लू वैक्सीन एक तो जो है, फ्लू वायरस जो है वो कोरोना वायरस नहीं है, ये एक टोटली डिफरेंट है, कोरोना फैमिली से है, इसका डेफिनेटली नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके अंदर फ्लू के खिलाफ भी एंटीबॉडीज मौजूद हैं, अब एक थ्योरी ये दी जा रही है अभी तक, अल्लाह करे ऐसे ही सही हो, कि पाकिस्तान में जो अभी तक मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत लो है, अल्लाह करे ऐसे ही रहे। इवन अगर हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ किट से मेजरमेंट्स नहीं हो रहे हैं, इसके बावजूद ये तो पता है कि अमवात कितनी हो रही हैं, उसको तो नहीं छुपाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं हमारे यहाँ, और उसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि हमारे यहाँ बचपन में लोगों को वायरल इन्फेक्शन बहुत होते हैं। इसी तरह से अगर आपने फ्लू वैक्सीन को लिया हुआ है तो प्रॉबली सम सॉर्ट ऑफ एन इम्यूनिटी माइट हेल्प यू, बट नॉट अ डेफिनेट रोल इन प्रिवेंटिंग कोरोना वायरस। Right, sir. Sir, thank you very much for your valuable time. Sir, it was a great pleasure. Sir, you took time for us and for the healthcare community. तो सर आपने बहुत सारी चीज़ों पे सर एक बहुत शॉर्ट टाइम में सर कवर किया सर। थैंक यू वेरी मच एंड आपका बहुत शुक्रिया, गेट फार्मा का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है। एंड आई थिंक इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, डॉक्टर्स में अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अपने पेशेंट्स को, अपने लोगों को जो उस कम्युनिटी में है, उनको ये समझा सकता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू कीप अ सोशल डिस्टेंस। हमारे यहाँ जनरली जो यंग लोग हैं आप जैसे, वो समझते हैं कि हमें कुछ होगा ही नहीं। अगर नहीं होगा तो कम जी से कम वो वायरस अपने घर में ले आएंगे और अपने वालदैन के लिए, अजीज़ों अक़ारिब के लिए खतरा बन जाएंगे। तो मेरा मैसेज यही है हर डॉक्टर के साथ और हर आदमी के साथ, कि सबको ये तलकीन कीजिए कि घरों में बैठे। राइट सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शुक्रिया आगे। थैंक यू।